from various sectors, various profiles, various domains. People like scientists are also under his guidance. Youth Forum is under his guidance. Grastas like us also is under his guidance. So people from all segments of society, they are being counseled by Prabhuji. And before joining ISKCON, Prabhuji did his MTech from IIT, and before that he did his BTech from BITS Pilani. And Prabhuji was professionally and academically very strong person, and then he joined ISKCON. So let's all chant Hare Krishna Mahamantra and welcome Prabhuji and seek his guidance and blessings today. Thank you so much, Prabhuji again. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. And we have His Grace Rambhadra Prabhuji with us. Most of us are fortunate to meet him in the temple and seek his advice and guidance. Rambhadra Prabhuji is also handling various positions in ISKCON, and one of the most prominent position as per me is the president of ISKCON temple, ISKCON Gurugram. Under his leadership in the temple has grown quite a few ways, in terms of preaching also, in terms of the social work also, food for life during COVID also. Prabhuji received quite a few distinct awards for his contribution during the COVID program, the Food for Life COVID program. And Prabhuji is also mentoring a lot of people under different segments and domains of the society. Youth Forum is also under his district. And then we have Rastas, we have professionals, ITNs, and tech people coming and taking Prabhuji's guidance on how to live a Krishna conscious life. So we are very grateful that we have Rambhadra Prabhuji also among us today. Let's all chant for him also. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा तुझो बंधु सखा हमारे तुझो बंधु सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय श्री श्री राधा दामोदर की जय श्री श्री गौर निताई की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय समेत भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय जय श्री राधे Hare Krishna. So we are back again to Nirvana. No, it's so. So Nirvana Society. We are back here again, and we thank all of you for inviting me again. Last time जब मैं आया था तो उस समय हमने बहुत निर्वाण के ऊपर चर्चा किया था, है ना?
How many of you were there in the last class? Okay, very good. So, anyone would like to recall something from that presentation? What was discussed? Any one point which you can remember? Yes, which principle? Leaf, eh? What is leaf? Relief. If you follow leaf, then you'll be relieved. You'll get relief. So, what is leaf? Can you explain? At least this much you remember. That's very encouraging. Eh? Yeah, so leaf. Anyone would like to explain? Okay, let us start. L. Guess. Let us start guesswork. Okay, let us guess what is L. Love. Okay. Eh? Light. Okay. Learn. Eh? Listen. Yeah, correct. Eh? It means you listened very carefully. L means listen. Eh? Listen. First important thing is that we should learn to listen. Many people want to speak. They want to express, more. And that's a good thing. Expressing is good. But more than expressing, as important is expressing my opinion, my viewpoint. That is called courage. You should have courage to express your opinions, your views. You're nice. You're nice. What is nice? Your needs, interest, concerns and expectation. Nice. Nice means needs, interests, concerns and expectations. They call nice. If somebody takes care of our needs, interests, concerns and expectations, then we say he is a nice person. Yes or no? Nice. So you have to remember nice. Then you will become nice. How many of you want to become nice? Everyone wants to become. You may not say, but everyone wants to become a good person, nice person. So this is the way. So generally we focus on our own nice. What is my needs, my interests, my concerns and my expectations. And we express also to others, I want this, I need this, I like this. So that is called courage. But at the same time, that is one level of maturity to have the courage, and everybody has. Even animals, they have this much courage. They express what they like and what they don't like. Like you go on the street and you see a dog, then if he doesn't like something, then he starts barking. Isn't it? So that doesn't require much education and training. That is natural even for animals. They also bark. They express their nice. Isn't it? That's natural. A baby also knows how to express his nice. A child expresses his nice by
crying. Although he doesn't know anything, he has never visited any school, college, but he knows how to get his work done. He starts crying. How to catch others' attention. Isn't it? That is natural. That you don't need much training. That doesn't require maturity. Maturity means, along with expressing our own nice courage, we should also have consideration. Courage along with consideration. What is consideration? Means, along with, when we are expressing our courage, our needs, interests, we should also consider others' needs, interests, and concerns and expectations. That is called maturity. That's what makes us mature person. इससे एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने भी सुना होगा ये स्टोरी। एक बार एक व्यक्ति जो है वो एक पार्क में जा रहा था वॉक करने, तो उसके हाथ में एक छड़ी थी, तो अपनी छड़ी को ऐसे घुमा रहा था, घुमाते हुए जा रहा था। तो उसके बगल से एक आदमी जा रहा था, उसके नाक में लग गया छड़ी। तो उस व्यक्ति ने उसको रोका, भैया आप छड़ी क्यों घुमा के चल रहे हो, है ना? तो उसने कहा, मेरे को संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, चाहे मैं जो करूं, जैसे घुमा सकूं, मेरी छड़ी है, जैसे घुमाऊं, है एक्चुअली राइट टू फ्रीडम है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये, राइट टू फ्रीडम। So he said that I have this right. I am free to, this is my choice, my stick. तो मैं जैसे चाहूँ वैसे घुमाऊँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आपका राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन वहीं पे ख़त्म हो जाता है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए, है ना? यू गॉट द आइडिया? बट दे नो कि हमारा स्वतंत्रता, हमारा अधिकार क्या है, बट दूसरे का अधिकार क्या है, दैट दे आर नॉट मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड एंड कंसीडर। दैट इज एक्चुअली मैच्योरिटी। तो that is called interdependence, concept of interdependence. Like there are 3 stages of maturity. One is called dependence, to independence, and then to interdependence. The 7 habits of highly effective people. There is a book written by Stephen Covey. In that book, he mentions that there are 3 levels of maturity. Mostly people, when they are dependent, they want to become independent. अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, है ना? लोग सोचते हैं एक बार अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, फिर किसी का सुनना नहीं पड़ेगा. No one will dictate me, है ना? That's how the goal of becoming independence is this, that no one can dictate me. Then my choice, my life, my choice, है ना? मैं जैसे रहूँ, I will not be dependent on anyone. So that's called independent. People want to become independent. So that they will not listen anybody. If I am independent, why I should listen you? I can manage my expenses, I can manage my, all the needs on my own, then why should I listen you? Isn't it? So they want to become independent, but he says that no, independence is the
one level of maturity, but we have to go one step ahead in life. That is called understanding the interdependency. That we are interdependent. We are dependent on each other. We cannot become independent actually. Independently we cannot become happy. So we have to be mature enough to see the interdependency. How we are interdependent. And for that's where we look for public victory. Public victory. And that's where we look for relationship, partnership, collaboration, and all these concepts comes. So collaboration, need of collaboration, partnership, relationship, all this. If a person is not able to see that interdependency, then he will not look for collaboration, partnership, relationship, and all these things. He will have nothing, all these things in his life. So he can grow to a certain extent, but beyond that he will not grow. Because alone you cannot do much in life. You need people in life to do big things. You need team to get the things done. Just like for the family life also, family life is what? It's a teamwork. It's a teamwork. Someone is doing something, other is doing something. If you think alone I can be happy, no, it's not possible. Like in a organization where you are doing some corporate organization, there are so much teamwork and we are dependent on each other. And if somebody cannot see that interdependency, then he will not value other person's opinion, others nice, and that's where problem starts. So a person who understands this, what is the symptom, how to understand that this person has that maturity, he has that vision of interdependency, he knows the value of other person dependency. The symptom is he listens. What is the symptom? He listens. That is the symptom. If somebody doesn't listen or care for others' viewpoint, others' opinion, means he doesn't understand the importance of interdependency. He is not mature enough. So therefore, first formula is L. L means listen. Listen. You have to learn to listen. Your baby, a small baby, वो रो रहा है, he's crying, so he's trying to express something. आप उसको ignore कर दिया है, चुप. You don't listen him. And whenever you don't listen the person, then you lose an opportunity. Lose an opportunity to develop that bond, relationship. So this is a very great art of listening. Listen other person. Hear what he wants to say. Either you agree or don't agree, that is secondary. You may not agree. It's not that we listen and we agree. No. Okay. But at least we listen. Let us hear what I feel we should go right. What is your opinion? So asking that, like your small boy is there, child. So my dear child, I feel we should go right. What is your opinion? So we know that his child, his baby is full number one. But still when you ask that, you are giving him a message. What is that? You value his opinion. That's how he learns to express his opinion. If you don't listen, you suppress him, you suppress the child, then the child will not learn to express his opinion. That's how many children, they become like that. Introvert, or
डिप्रेशन में चले जाते हैं. They don't know, they don't express. They have so much inside, but they don't express, and parents even may not notice that my child is keeping all these, grudges inside. And then that will appear in their behavior. They will start, non-reciprocating. आप कुछ बोलोगे, वो उनके अंदर कोई इमोशन नहीं होगा उसके लिए. They will not feel any emotion. So that's how children and parents, they have, it happens like that. That relation, because we don't listen them. You are a grown-up person, so you may not like watching TV. It is maybe a waste of time for you because you have so many important things to do, but for him it's very important. For you it may be running a big corporate organization is important, but for him, his toy is very important. Yes or no? So you have to, if you value him, then you have to value his toy. Equally, then you value your corporate organization. For you, if you are earning $5 lakh a month, for him that toy is more important than that $5 lakh. Yeah, that is very close to his heart. And if we don't know this art, then we spoil all the relations. And that's how the bliss goes in life. So, making other feel that yes, he is also important. Doesn't matter how great we are. Like, I'll give you an example, simple example from Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवत पुराण आपने सुना भी होगा. ये बहुत फेमस लीला है, भगवान कृष्ण की लीला है सुदामा के साथ. सुदामा जब आए थे, बहुत गरीब थे सुदामा, उनके फ्रेंड थे, भगवान कृष्ण के फ्रेंड थे सुदामा, और बहुत गरीब थे. उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था. पत्नी ने बोला, जाओ तुम्हारे दोस्त जो हैं द्वारकाधीश है, राजा हैं, कुछ मांग के लाओ, है ना. और पत्नी ने उनको चूड़ा दिया, पड़ोसी से लोन लेकर, उधार लेकर. घर में इतना कुछ भी नहीं था. सुदामा ने कहा, मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, खाली हाथ थोड़े जाऊँगा, कुछ दो गिफ्ट. पत्नी कहती है, अरे वैसे ही कुछ नहीं घर में, वो भी देने का सोच रहा है. तो पड़ोसी से उधार लेकर गई देने के लिए, दिया. अब आप बताइए, आप में से कितने लोग लोन लेकर मंदिर में डोनेशन देंगे? You see the quality of heart. Sudama's quality. You see how wonderful the concept here. कि भगवान को वो, उसके घर में कुछ नहीं है तो दूसरे पड़ोसी से लोन लेके जा रहे देने के लिए. मांगना तो है इंटेंशन, बट फर्स्ट ही वांट्स टू गिव समथिंग. तो वो लेके जाते हैं वहाँ, और फटे पुराने कपड़े हैं बिल्कुल. तो भगवान को पता चलता है, भगवान दौड़ते हुए आते हैं, उनको ले जाने के लिए अंदर लेके जाते हैं, और उनको गले लगाते हैं, ना, अपने फ्रेंड को. उसको अपने सिंहासन से नीचे बैठ जाते हैं और उसको अपने सिंहासन पर बैठाते हैं, सुदामा को. और रुक्मिणी जी जो हैं, जो उनकी पत्नी है, वो स्वयं लक्ष्मी हैं, वो, है ना, पंखा लेकर ऐसे सुदामा को पंखा जल रही हैं, है ना. भगवान नीचे बैठ जाते हैं जमीन पर, थाली में जल लेकर सुदामा के चरण धोते हैं अपने हाथों से. फिर पूछते हैं भगवान की, है ना, भाभी ने कुछ भेजा है गिफ्ट, है ना. और सुदामा देखता है इतना ऐश्वर्य है, इतना चारों तरफ, है ना, सोने चांदी हीरे जवाहरात लगे हुए घर में, एकदम जहाँ बैठ फर्श भी बना हुआ है कीमती रत्नों से. तो वो चूड़ा कहाँ से निकालेगा? वो सोच रहा है, चूड़ा क्या खिलाऊंगा इनको, इतने धनी आदमी हैं, उसका वैल्यू देंगे क्या, है ना. और भगवान जानते हैं कि लाया है, दे नहीं रहा है.
तो भगवान स्वयं पूछ रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, मेक द फर्स्ट मूव हैं, पूछ रहे हैं कि कुछ दिया है क्या, भाभी ने कुछ भेजा है? तो सुदामा बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं भेजा है कुछ नहीं भेजा है। तो भगवान तो बहुत चालाक हैं, है ना, तो तुरंत पीछे से खींच लेते हैं पोटली, बोलते हैं तुम छुपा रहे हो, इतना कीमती उपहार लेके आए हो और छुपा रहे हो। फिर उसको खोलते हैं भगवान, है ना, और खोल के वो देखते हैं चूड़ा है, इतने खुश होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं उसको देखकर। आपके यहाँ कोई गिफ्ट लेके आता है और उसका वैल्यू कुछ नहीं होता, देख के क्या रहता है, क्या है यार ऐसा गिफ्ट लेके आया है ना, हमारे स्टेटस के हिसाब से बहुत खराब है। भगवान देखते हैं इतना आनंदित हो जाते हैं, मतलब यू वॉन्ट बिलीव द वे इट इज एक्सप्लेन्ड इन श्रीमद् भागवतम, द लॉर्ड इज सो हैप्पी टू सी दैट। क्या देख रहे हैं भगवान उसमें, है ना, वैल्यू, उसका वैल्यू, कितना वैल्यूएबल गिफ्ट है। तो वो खा जाते हैं गिफ्ट, चूड़ा खाते हैं, है ना, और बताया जाता है कि एक बार खाए, दो बार, तीसरी बार रुक्मिणी जी ने रोक दिया क्योंकि पेट खराब हो जाएगा वाइफ का टेंशन रहता है कि कहीं हस्बैंड का पेट न खराब हो जाए, तो प्रेम में खा रहे हैं भगवान, है ना। उसके बाद फिर काफ़ी दिन तक साथ में रहे, सुदामा वहाँ रहे, और फिर सुदामा का टाइम आ गया जाने का। सुदामा बोले अब मैं जाऊँगा वापस। भगवान बोले ठीक है, मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन जिसको जो मिलता है उसको एक दिन तो पीड़ा होना ही है, हर व्यक्ति को भी छड़ना है एक दिन। तो जाने लगा सुदामा, सोचा कि जाऊंगा वापस, कृष्ण ने तो कुछ दिया ही नहीं, अब जो लोन लेके आया था वो भी खत्म हो गया और कृष्ण ने कुछ दिया ही नहीं। जा रहे रास्ते में सोच रहा है भगवान ने कुछ दिया क्यों नहीं। ठीक है, मैं नहीं मांगा, क्योंकि रिलेशनशिप मांगना थोड़े होता है, मांगा नहीं जाता है। फिर सोच रहा है वहाँ जाऊँ तो वाइफ क्या बोलेगी कि आप गए, एक तो चूड़ा लेके गए लोन, और वो भी उतना भी नहीं लेके आए, जिस पर्पस के लिए गए थे वो हुआ ही नहीं। तो सोच रहा है क्या जवाब दूंगा पत्नी को। फिर सोच रहा है हम तो नहीं मांगे कुछ, लेकिन उनको तो दे देना चाहिए था, खुद समझ रहे, वो तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, भगवान ने क्यों नहीं दिया। ऐसे सोचते सोचते वो पहुंच जाता है, कहाँ, अपने घर पहुंचता है जहाँ उसका घर है ना। अभी भी वो स्थान है सुदामा का घर, पोरबंदर में सुदामा का घर है, आज भी वहाँ पे मंदिर है। तो वहाँ पे जब वापस जाता है देखता है कि उसका घर गायब है। जो झोपड़ी थी तो झोपड़ी है ही नहीं, न पत्नी दिख रही है, न झोपड़ी दिख रहा है, और वहाँ पे एक बड़ा महल खड़ा है। बोलता है ये लो, लेने के देने पड़ गए, लगता है कोई हथियार लिया मेरा जमीन और उस पर घर बना दिया अपना महल। इस बीच में मेरी पत्नी अकेली थी, उसका लाभ उठाकर ऐसे सोच रहा है ना, तो और नुकसान हो गया, है ना। तभी अचानक एक स्त्री निकल के आ रही है, बिल्कुल रानी की तरह सजी हुई है, और पीछे कई सारी दासियां हैं, और लेकर आरती की थाली लेके आ रही है, और नजदीक आती है। सुदामा बोलता है कौन है? बोलते स्वामी आप पहचाने नहीं मुझे, है ना। द्वारकाधीश ने इतनी कृपा की हमारे ऊपर। सुदामा सोच रहा है भगवान ने दिया ये सब, हाँ सब कुछ दे दिया, तो उसने बताया क्यों नहीं मुझे। एक बार भी नहीं बोला कि मैंने ये सब करवा दिया है। तो किसी ने भगवान से पूछा, है ना, कि आखिर आपने बताया क्यों नहीं सुदामा को, है ना। तो सुदामा को आप बता देते कि मैंने एक तुम्हारा काम करवा दिया है। तो भगवान ने बताया कि मैं सुदामा को इस नहीं बताया, मुझे शर्म आ रही थी बताने में। तो क्यों शर्म आ रही थी? बोला कि सुदामा जो जिसने मुझे जितना दिया उसकी बराबरी अगर मैं देता तो मैं उसको बताता, लेकिन मैं उसकी बराबरी नहीं कर पाया। तो क्या दिया ऐसा उसने?
सुदामा के पास कुछ नहीं था जी, उसने बाहर से लोन लेकर दिया। तो अगर मेरे को उसकी बराबरी करनी है तो मेरे को भी लोन लेकर देना पड़ेगा, और सारी सृष्टि मेरी है तो मैं लोन किससे लूंगा? इसलिए मुझे शर्म आ रही थी, मैं क्या दूं उसको, इसलिए पीछे से मैंने भिजवाया। इसको कहते हैं सेंसिटिवनेस। भगवान देखिए क्या किस दृष्टि से देख रहे हैं उसको, वो देखने का नजरिया। तो लिटिल थिंग्स मैटर्स ए लॉट। क्या? लिटिल थिंग्स मैटर्स ए लॉट। If he thinks that is not little, how big it is. If you think how big it is, for a small child, that little things matters a lot. And those little things makes big difference in long run. So a relationship is not about achievement, it's about exchange. So when relationships are there, we have to, the first formula is listen. Because when we listen the person, we understand the person. That is the only way to understand the person, what the person needs. If I don't listen, how will I know what are your needs, what are your interests, what are your concerns, what are your expectations? And if I don't know your needs, interests, concerns, expectations, in short, nice. If I don't know you're nice, then how will I serve you? Isn't it? How will I serve you? If I ask, are you feeling cold? You say no. If I don't know, then how will I make arrangement? What do you need? If I don't know, what are you eating? What is your favorite dish? How will I serve you? कोई व्यक्ति है, उसको गुलाब जामुन अच्छा लगता है, उसके घर कोई व्यक्ति आया, उसको स्वीट, बढ़िया क्वालिटी का स्वीट दे रहा है, वो खाया ही नहीं क्योंकि उसको डायबिटीज है। आपके लिए वो अच्छा है लेकिन उसके लिए वो अच्छा, तो अगर आपको उसको सर्व करना है तो उसको जो अच्छा है वो देना पड़ेगा। So for that, आपका क्या अच्छा लगता है उस साइड कीजिए। अभी आपको देखना पड़ेगा उसका क्या अच्छा है, नीड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेक्टेशन। So that is called consideration, and that is only way to know other person is to listen from him. And mostly you will see people don't tell also. आप पूछोगे भी तो नहीं बताते हैं लोग। सोचिए, जब पूछने पर नहीं बताते हैं तो नहीं पूछेंगे तो क्या करेंगे? That's why although we stay with the people for many years, we do not know actually them. हम उनको समझ नहीं पाते हैं। हम उनके साथ रह रहे हैं, काफी साल से रह रहे हैं, बट हम उनके बारे में जानते नहीं क्योंकि हम उनसे सुनते नहीं हैं, कभी वो एक्सप्रेस करते नहीं, क्योंकि हमारी रिलेशनशिप अभी उस लेवल पे नहीं जा पाए इतने सालों के बाद भी कि वो व्यक्ति ओपनली अपने हार्ट को शेयर कर सके हमसे। That maturity, that relationship has not reached to that level of maturity yet, although living for so many years. तो उसको कुछ है, वो कुछ एक्सपेक्ट करता है, वो व्यक्ति बोल नहीं पाता है। क्यों नहीं बोल पाता है? Why? Experience says that कोई फायदा नहीं। क्या? एक्सपीरियंस से उसको समझ में आ गया कि कोई फायदा नहीं है बोलने का। भैंस के आगे पीठ बजाओ, भैंस करे पगुराई, है ना? कोई फायदा नहीं है, इनसे बोलने का कोई लाभ नहीं है। ये जब स्टेज रहता है रिलेशनशिप में तो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, और वो सबसे बड़ा कारण है प्रॉब्लम का, रिलेशनशिप। इसलिए लिसन, तो पहला पॉइंट क्या है? Listen, live formula, and that art we must learn to listen. So everyone who is in my life,
You know? And that is all consideration. We are considering, we are valuing other person. Otherwise, although we are using people, not valuing. We use people. And using, and then one more step, worse than using is to abusing. What we speak of valuing, valuing, serving, valuing, using and abusing. There are 4 levels. We may value the person, but we may not serve the person. So serving is the highest. Then valuing. If you can't serve, at least give value to the person, his opinion. If you can't do that, at least then people use. जब वो for my convenience, my needs, my interest, I manipulate the person. But the goal is to satisfy my nice. So that is called self-centered focus. And relationship cannot go on in this. Although it may exist, if there is no other option, तो चलता रहता है, ठीक है, चलो चलाना तो है, क्या कर सकते हैं. So this is the first principle. If you want a very healthy, loving, happy relationship, then we also have to learn the art of listening. Try to understand before getting understood. That is the 5th habit. This is try to understand before getting understood. नहीं, हम सुने आप मेरे को समझने का प्रयास करो. पहले आप समझने का प्रयास करो. हर व्यक्ति समझाना चाहता है, समझना नहीं चाहता है. जो समझना चाहता है वो बोलेगा, what is your opinion? I want to learn. I want to listen. What are your views? What are your likes? What are your dislikes? And then, so you say, I feel we should go right. What is your opinion? So the person said, no, I feel we should go left. Then what will you do? What will you do? So then you ask him, why do you feel like that? Can you explain me the reason? So the person will explain the logic behind his decision. Try to understand. Okay. Yeah, it's a very good point. I think I never thought in that way. Your point of view is also very good. I never thought in that way. When you say like that, then the person feels valued. But then suppose you feel that his other person's point of view is like, उसमें कुछ problem है. You can see the problem. Your point of view is very good. I think this part you said is very good, but I can see here there can be a problem if you go left. So something good is there, you appreciate, but then you see some problem, then express. इसको कहते हैं dialogue. क्या कहते हैं? Dialogue. It's not a monologue. It's a dialogue. Wherever there is dialogue, healthy dialogue, discussion, discussion, it's called synergy. It's called synergy. Synergy means 1 + 1 = 11. So this is called teamwork actually. So we are using our own brain. At the same time, I have another brain also with me, and that brain is also active now. And then another brain. I have 5 brains, and they are not thinking, and then we are coming with the best solution, best decision. So that way, and then if other person says, "Oh, I think we should go left." What? How dare you?
to go against my opinion. If that attitude, general response is like this. तुम हमेशा मेरे को काटते हो, जो मैं बोलता हूँ उल्टा ही सोचते हो, इस तरह की भावना जो आई, ईगो पे ले लिया. क्या हो गया? We take it on ego level, and that's where problem starts. Rather than taking on ego, you can, use that opinion. You can engage that opinion, discussion, and then you can come to a better solution. इसमें एक फायदा है ना? क्या फायदा है? कि थॉट मॉडलिंग इसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं? थॉट मॉडलिंग. एक तो मॉडलिंग आप लोग जानते हैं, मॉडलिंग का बिजनेस से मॉडलिंग का जमाना भी है ना? हर व्यक्ति मॉडल बनना चाहता है. So we model, behavior. We model behavior, but also we should model our thoughts. Model thought means why you make this decision. Why are you want to go right? When you share your thought, the way you think, other person also learns from that. Basis of your decision making, when you, like your child is there, you ask him, where do you want to go? I want to go left. Why do you want to go? I want to go left because this I will get, I will get this, my toy there. You want to go to market? I want to go this direction because my toy shop is there. So you ask him, but we have to buy this also. Because we should go right, because this. When you explain the reason why we should go right, why, and then we'll come to your price of. So the child is understanding, why my father is not going to our twice of. If you don't go to our twice, explain why you are not going. It's called thought modeling. And in the process explaining, you also value that I know that, मुझे पता है कि twice शॉप पे भी जाना जरूरी है. And I will go there also, but पहले हम तो इधर जाएंगे बेटा, then we will go to your shop, because this is more important. यहाँ नहीं गए तो ये नुकसान हो जाएगा. तो उसके बाद you are explaining the reason, then he also becoming mature how to think, how to make decision in life. This is called thought modeling बोलते हैं. And direct है, चुप रह, चुपचाप चलो इधर जाना है, बोलना बस मत कर. जैसे क्या तो we lost an opportunity to train the child how to think, So we can train also. We can make people mature, and then we can listen from him also. कई बार बच्चा भी बहुत अच्छे आइडिया दे देता है, So is it clear? So that way we relationship, when we listen, this art of listening we understand, we can learn so many things. That's why Krishna is listening in Bhagavad Gita. Whole first chapter of Bhagavad Gita, Krishna doesn't speak even a single word. And Arjuna is speaking. And he says, I will not fight. And then he is giving reason why I will not fight. Thought modeling. He said कि सारे संबंधी मारे जाएंगे तो राज्य मिल भी जाएगा तो क्या फायदा होगा, सब लोग मर जाएंगे, पाप लगेगा, कल्चर नष्ट हो जाएगा, ट्रेडिशनल कल्चर नष्ट हो जाएगा. ये सारी रीजन बता रहे हैं. थॉट मॉडलिंग इसको बोलते हैं. व्हाई आई डोंट वांट टू फाइट. कृष्ण सुन रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं बैठ के. ओके, फिर कृष्ण बोलते हैं कुछ, है ना, ऐसा मत करो. फिर अर्जुन बोलते हैं. इसलिए आप देखो पूरा भगवद गीता का एक डायलॉग है. क्या है डायलॉग? भगवान ने निकाला, चुपचाप मैं बोल रहा हूँ ना, लड़ाई कर रही तो पहले तेरे को मारूंगा. मैं भगवान हूँ, ठीक है, मैं भगवान हूँ. तुमको कोई डाउट है? भगवान चाहते तो फर्स्ट चैप्टर में विश्व रूप दिखा के उसको डांट के लड़ाई कराते हैं, ठीक है. 11th चैप्टर में विश्व रूप दिखाया यूनिवर्सल फॉर्म, तो फर्स्ट चैप्टर में ही दिखा सकते थे ना. बोले मैं भगवान हूँ, देखो और चुपचाप लड़ो. But no, he has to do thought modeling. क्या? थॉट मॉडलिंग, किस बेसिस पे डिसीजन लेना है. और वो थॉट मॉडलिंग रिकॉर्डिंग हुआ. आज देखिए सारा संसार उसका लाभ उठा रहा है. अगर कृष्ण
20 रूप दिखा के लड़ाई करा दिया होता तो उस समय काम हो जाता, लेकिन आज काम नहीं होता। तो उसको रिकॉर्डिंग करा दिया एंड बुक में डाल के फिर हमको दे के चले गए। तो हमको पता चलेगा कि भगवान का थॉट प्रोसेस कैसा है, हाउ गॉड थिंक्स, एंड देन वी आल्सो कैन थिंक लाइक गॉड, नॉट लाइक मॉन्क। Think like God, because monk thinks like God. Thinking like God, then you'll be very happy. So that's what Bhagavad Gita is. That's why he took so much time to explain him. Each and every question he's asking, and Krishna is very patiently answering. Patience, answering. बोले इतना टाइम क्यों वेस्ट कर, इतना टाइम बच जाता अगर तू मान लेता मेरी बात। कई लोग बोलते पहले चैप्टर में मान लेता अर्जुन तो टाइम बच जाता है। टाइम नहीं बचाना है हमें। आप ये देखो कि एक लीडर क्रिएट हो रहा है। अगर मैं अपने बच्चे को अपने थॉट प्रोसेस शेयर कर रहा हूं तो आई एम क्रिएटिंग अ मैच्योर पर्सन, एंड टुमारो आई कैन गो फॉर रेस्ट एंड ही विल टेक ओवर द वर्क. He can do all the job because he knows how to do the job because I have explained him. So that is not a time waste, that is investment. अगर हम explain करें डिटेल में लोगों को कि basis of my decision making, तो सामने वाला व्यक्ति मैच्योर हो जाएगा डिसीजन मेकिंग में। कल के वो he can take his own decision. So that way, that is not waste and we should do that. जब भी हम कोई बोले क्यों कर रहे हैं उसका रीजन जरूर बताना चाहिए, है ना? And then the person learns, and उससे भी सुनना चाहिए. So that is called listening, dialogue, listening, and it's a very very powerful tool. And empathetic listening called. Listening कैसे करना चाहिए? जब हम सुन रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति जब बोल रहा है तो हमको उसके सूझ में जाके खड़ा होना है. Just like for example, जैसे बच्चे के एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चा बोल रहा है ना, खिलौना दे दो, तो आप अपने सोच में बैठ के अगर उसके सुनोगे तो उल्लू आदमी खिलौने के लिए इतना परेशान है, 5 रुपए के खिलौने के लिए मेरा 1 घंटे बर्बाद कर दिया, 1 घंटे में 5 लाख कमा लेता। क्योंकि आप कौन से सोच में खड़े होकर सोच रहे हैं? अपने सोच में खड़े होकर सोच रहे हैं, आपने उसके सोच में नहीं डाला। For him that toy is very important more than your 5 lakh. जब हम उसके सोच में खड़े होते हैं तो उसकी भावनाओं को समझते हैं। That is called empathetic listening. And then I can, relate with the person. I can deal with the person with much mature way. तो उसको सुनना चाहिए, उसकी क्या टेंशन है, उसकी क्या एंजाइटी है, और उसको 5 रुपए का टॉय चाहिए तो आप जल्दी से दे दो। सुनने से बच्चा, क्योंकि कल गए वो भी बड़ा हो जाएगा ना, आज वो बच्चा है लेकिन कल वो बड़ा हो जाएगा तो वो याद रखेगा, है ना, कि वो 5 रुपए का टॉय में के लिए पिताजी ने 5 लाख रुपए अपना छोड़ दिया था, है ना? मतलब फॉर माय फादर आई एम मोर इम्पोर्टेंट देन मनी. That's what you are giving the message to your child. So sometimes we should do like this. Little things matters a lot, and makes big impact in our relationship. Okay, so I just explained today L, E and A and F and U. So further we will discuss more, and it all becomes very easy to practice if you all read Bhagavad Gita. Bhagavad Gita gives the idea how to manage our emotions, feelings, because for all this you need, goodness. If you are passionate, galloping horse cannot eat grass. घोड़ा भागता घोड़ा घास नहीं खा सकता। घोड़े तो अगर घास खाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको रुकना पड़ेगा। That is called goodness. क्या कहते हैं उसको? Goodness. Good thought comes in goodness. If you are very much disturbed, very difficult to behave in a good manner.
So keeping ourselves in goodness is very, very important. Don't become workaholic. Don't become too much passionate. That is required. Balance your life, basically. Balancing is very, very important. Balance. There are so many dimensions of life, and we should learn to balance all the different aspects of life. Like we have health, we have relationship, we have livelihood earning, we have spirituality, we have our responsibility towards society, towards nation, towards the global community. We have our duty towards the our soldiers who are standing on the border. Even हम देखो यहाँ पे बैठे हैं, and they are sitting there they are standing on the border, -20 degree temperature. Because of them, we are happily shopping in the malls. Yes or no? So do we remember them when we go to malls? जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर में आए हैं। लेकिन देखिए हमारी फैमिली सुरक्षित है क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी फैमिली छोड़कर उसकी रक्षा कर रहा है। So we have certain duties to them also. And so these are also aspects of life, various responsibility, and we should learn to balance. How I can balance different dimensions. कई बार हम वर्क करते करते इतना उसमें लग जाते हैं जॉब करते हुए कि we neglect our relationship. We don't pay attention to relation because we are so busy in work. Sometimes we neglect our health. Because so much work is there, task has to be finished, deadline. And unfortunate thing is that, अब देखो जब हमारे पास कंप्यूटर नहीं था तो ऑफिस 8 घंटे का हुआ करता था। फिर हमने सोचा कि अगर कंप्यूटर आ जाए तो काम फास्ट होगा, है ना? तो 8 घंटे का काम 4 घंटे में कर लेंगे और टाइम बचेगा। लेकिन क्या होगा, टाइम बचा और बढ़ गया, है कि नहीं? इसे बिकवाई, क्योंकि डिजायर्स अनलिमिटेड है, डिजायर्स आर अनलिमिटेड। जितना आएगा उतना कम लगता है, जितना भी आएगा उतना कम ही लगेगा, ये भी कम है ना? कैसे क्यों कम लगता है? इसलिए कम लगता है क्योंकि हम हमेशा कोई ना कोई होगा जो हमसे ज्यादा उसके पास होगा। आपके पास कितना भी हो जाएगा ना तो आप सेटिस्फाई नहीं रहोगे क्योंकि आपका नजर हमेशा उस पर रहता है जिसके पास आपसे ज्यादा है। और जब आप उससे तुलना करते हो तो क्या लगता है, अरे यार मेरे पास कुछ भी नहीं, उसके पास बहुत ज्यादा है। अगर आप अदानी बन जाओगे तो आपकी नजर होगी ओएन मस्क पर, क्योंकि उसको लगता है कि मैं अभी 3rd पोजीशन पे हूँ, 3rd रिचेस्ट व्यक्ति हूँ, मेरे को फर्स्ट बनना है ना? There is always someone to look for, and then we are always busy. I am not saying that we should not become busy, we should become, but at the same time not neglecting other important aspects of life, because that is also very important. Because spirituality is very important in life. Very important. Not important, that is the goal of life actually. क्योंकि हम देखो, हम इस संसार में खाली हाथ आए थे और जाएंगे कैसे? खाली हाथ जाएंगे ना? आप में से कोई एक्सेप्शन नहीं है ना कि रुकेगा यहाँ? सबको जाना है एक दिन,
और जो भी हम यहाँ पे लिए हैं वो यहीं पे रख के जाएंगे, लेके नहीं जाने वाले हैं। ये आएंगे खाली हाथ, केवल हमारे साथ क्या जाएगा, हमारे कर्म जाएंगे। वो कैसे जाएंगे, ऑनलाइन ट्रांसफर होते हैं, है ना। भगवान का एक नेटवर्किंग सिस्टम है, वो डाटा ट्रांसफर हो जाता है, सारा रिकॉर्ड, है ना। और अगला फिर जन्म होगा आपका दोबारा, तो पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार नेक्स्ट आपको जन्म मिलेगा। और आपका डेस्टिनेशन तय होगा। जैसे दिस सोसाइटी यू ऑल आर वेरी रिच पीपल हियर एंड दैट इज वेरी गुड। व्हाई यू आर रिच? बिकॉज आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए। व्हाई आइंस्टीन इज आइंस्टीन? बाय बर्थ हिज इंटेलिजेंस इज वेरी हाई। बाकी बच्चों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस है उसके अंदर, है कि नहीं। गधा कितना भी मेहनत करे घोड़ा नहीं बन सकता है, कितना भी पुशअप करेगा। गधा कभी घोड़ा बन सकता है? पुशअप करके नहीं बन सकता है। और घोड़ा कभी शेर नहीं बन सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकता है, घोड़ा में ही थोड़ा बेस्ट घोड़ा बन सकता है, लेकिन घोड़ा शेर नहीं बन सकता। और शेर कितना भी लेजी हो जाए घोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही डाला गया है वो चीज, वो वैसा रहेगा। वो जो प्रिविलेज उसको बाय बर्थ मिला है वो रहता ही है। दैट इज कर्म। He can become richest person on the earth without doing anything. बस आपको जन्म लेना है अंबानी जी के घर पे, and he become richest person in India. Without going any education, no business, nothing. Just take birth. That's all. आपको उस व्यक्ति से रिलेशन बनाना पड़ेगा जो सारा एलोकेशन करता है, अलॉट करता है कौन किसी घर में जन्म लेगा। आपके बच्चे हैं ना सब, उन्होंने अपना एलोकेशन करा के अलॉटमेंट करा रखा है, इसलिए देखिए खुश हैं अभी। हाँ, वो कुछ ना भी करे तो वो मिलेगा उनको, है कि नहीं है? क्या किया? कुछ नहीं किया। प्रैक्टिकली में देखा जाए तो बचपन से ही दे आर गेटिंग ऑल दी फैसिलिटी। एंड आप जाओ रोड पे देखो बच्चे रिक्शा खींच रहे हैं, है कि नहीं, भीख मांग रहे हैं। क्या किया उन्होंने? व्हाई सो मच डिफरेंसेस? प्रीवियस कर दो। वही बीज बबुल का तो आम कहाँ से पाए? इसको कहते हैं कर्म। कर्म इज वेरी पावरफुल। इट कैन मेक यू विदाउट डूइंग एनीथिंग यू बिकम किंग, बिकॉज प्रीवियस लाइफ यू हैव डन वेरी गुड वर्क। तो इसलिए हमको इन सारी चीजों को समझना चाहिए। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। हाउ कर्मा ट्रांसफर फ्रॉम वन लाइफ टू अनदर लाइफ। आत्मा के साथ जाता है, आत्मा मरती नहीं है। जब हम मर जाएंगे तो हमको लगता है कि नष्ट हो जाएगा। वी डाई, वी नो वन डाइज। भगवान तो नहीं मरते, हम लोग भी नहीं मरते। न जायते म्रियते वा कदाचित्, गीता में भगवान बता रहे, नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न नित्यं न शरीर। आत्मा का कोई विनाश नहीं, शस्त्र काट नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो नैनम शोषयति मारुतः। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती। नो वन विल डाई। क्या होगा? ओनली बॉडी विल डाई। एंड बॉडी भी नहीं मरता है, शरीर भी नहीं मरता है। बॉडी इज ऑल्सो ओनली चेंजेस द शेप। बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो नष्ट नहीं होते, जैसे अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। दैट्स ऑल ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स ऑल। कुछ भी नष्ट नहीं होता, केवल शेप चेंज होता है, दैट्स ऑल। और ये जो ज्ञान है ये भगवान ने भगवद गीता में दिया है। उस दृष्टि से जब हम देखते हैं संसार को तो हम अपने कर्मों के ऊपर वर्क करते हैं। देन
we find a need to work on our karma. हमारे कर्म गलत नहीं होने चाहिए, अच्छे कर्म होने चाहिए. आज मैं जो फल भोग रहा हूँ पिछले जन्मों कर्मों का फल, लेकिन आज जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो आज बीज बो रहा हूँ, उसको काटूंगा फ्यूचर में. तो जनरली आप देखो जो लोग रिच होते हैं, if they are not spiritually guided, they misuse their wealth. They misuse their wealth in wrong things. And then they are creating their dark future. Next slide. You have got opportunity. You can use that wealth for promoting goodness. But generally you see, कहते हैं ना, power corrupts. And absolute power absolutely corrupts. तो जब पावर आता है, whether it is money power or whatever power, जो व्यक्ति का दिमाग करप्ट कर देता है, और वो सोचता है कि मैं, there are so many big industrialists, they have so much money, they do not know what to do with it. And here we are struggling with the money. Then we can get some money, we can start some spiritual program so that public can get benefited. So those who have money, they have responsibility. Those who have power, they have responsibility. Why God has given you power? Why public makes you prime minister? So that you keep beating people with a stick? No. Public makes you king so that you can serve the public. Use that power. Public has given you power. You use that power to serve the people. Yes or no? So similarly, when God gives us power, what is the purpose? Use that power to serve the purpose of God. And तो बोलते तो ये तो मेरा पैसा है, मैं चाहे जैसे यूज करूं. लेके आए थे क्या? पैसा लेके आए थे. It's all God's power. He gave us. Why? Because He trusts us. He has given us so that we will not misuse it. हम कुछ हमारा अपना नहीं है, कुछ अपना नहीं है. आप देखो ये आंख जो हमारा, जिसे हम देखते हैं, ये आंख भी हमारा अपना नहीं, भगवान ने बना के दिया है, हमने थोड़े बनाया है. Who made these eyes? These eyes. Who made these hands? Certainly we have not made. हमने तो नहीं बनाया ना. Parents ने भी नहीं बनाया. So who made? It is God who makes. And He makes and He gives us. With the hope that we will not misuse it. अब देखो, अगर आप हॉस्पिटल जाओ, एक कान है, उसको ट्रांसप्लांट करने का कितना पैसा लगता है? 5 लाख रुपए लगेगा एक कान का. 2 कान का 10 लाख. उसी तरह से आप शरीर के सारे पार्ट्स को ट्रांसप्लांट करो, टोटल कितने रुपए का हमारा शरीर है, बताइए इस हिसाब से. करोड़ों रुपए का तो शरीर बना के दिया, और ब्रेन का तो कोई कीमत नहीं है. और ब्रेन इज सो पावरफुल. बताते हैं कि ब्रेन की इतनी कैपेसिटी है, द ब्रेन कैन स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन इन ऑल द लाइब्रेरीज ऑफ द वर्ल्ड. इट हैज सो मच कैपेसिटी. So many trillion brain cells are there in our brain. Trillion brain cells. And each cell is more powerful than the most computers around the planet today. Each brain cell. Means एक brain के अंदर trillions of the computers हैं लगे हुए. हमको चलाने के लिए, हमको घुमाने के लिए, हमको दिखाने के लिए, सारा सिस्टम अंदर सेट किया हुआ है. And such a powerful system God creates and He hands over to us. No? Why? And then with using that powerful, costly system, what are we doing? Sharab. People are drinking. No? उस सिस्टम में और वो चीज जो
not good for the system actually. They are harming themselves. Why? Because they don't know what to do with the money. So somewhere if you don't know how to use the money, then you misuse the money. And then you get bad karma. And that's how we create our future. So we should properly, rightly use the power which God has given us in right direction, and that creates your bright future. You'll be very happy in future. So that's what is spirituality. And we should pay attention to that. And certainly, even you do something good, no? Because somebody say, who is handsome? Who is handsome? Who extends his hand to someone, he is handsome. That is handsome. And that's what God has made. So we should also understand our spiritual duties. Next slide. These are the very important aspects of life. And we should not forget to plan for career. Two careers are career before death and career after death. So mostly people are planning career before death, career planning. But they don't include career after death. That also we should plan. And Bhagavad Gita is about complete career planning. Before death and after death, everything. All lessons are there. Some lessons are there for this career, this life, and some lessons are there for the next life. Complete plan. So if you want to become happy in this life, that's okay. And the next life also, you can read Bhagavad Gita. That's what it is there. Then you can chant Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. That's why we're not trying to waste your time. We are trying to help all of you to understand the very, very important essential principles of life. And you are not going to lose anything. If you chant Hare Krishna, are you going to lose anything? Are you going to lose anything? Are you going to lose your money? Are you going to lose your house? No. Then why people don't chant? There are a lot of good benefits. There are hundreds and thousands of people have got benefited by mantra meditation, chanting, but still we don't do. Why? Mind takes us. Mind will take. बोले इससे क्या होगा? गीता पढ़ने से क्या होगा? शराब पीने से ठीक है. शराब पियो. नेगेटिव चीजों की तरफ माइंड जनरली खींच के ले जाते हैं ना. सरप्राइजिंग थिंग जो चीज हमारे लिए नुकसानदायक है वही हमें अच्छा लगता है. आप देखो फतिंगा है. फतिंगा को क्या अच्छा लगता है? फायर. बरसात के महीने में फतिंगे दौड़ के जाते हैं कहाँ? बल्ब के नीचे. और सुबह जाएंगे तो हजारों दीवाने सहित मिलेंगे वहां. सबके लाइफ पे आप एक मूवी बना सकते हैं. लैला मजनू, प्यार में मौत मिली है कि नहीं? आप सब प्यार बोलेंगे अमृता. What is surprise? What is most destructive is most attractive. And if you don't understand, you fall prey to all these elements, and lives are destroyed. Families are destroyed. People are destroyed. You see, Bill Gates, at the age of 57, he got divorced. You know why? He is the owner of Microsoft. He is so brilliant, intelligent person, but he cannot control his senses. He had an affair with one of his employee, and then his family got divorced. At the age of 57, just imagine. He had family, wife, everything. But everything is finished. His own board of directors removed him from Microsoft because he broke his own moral standards set by his value standards of Microsoft. But of course he was removed respectfully. But that's how it is. So it may be powerful, but if you practice this spirituality, you get a lot of inner strength to resist the negative things. They're very attractive. Bill Clinton, you know the name.
He was the president of US. And then said his entire prestige was finished. So what is very attractive but very dangerous. There are many things very dangerous. And that is the irony. जो खतरनाक है वही पसंद है ना, वही पसंद हो जाता है, अच्छा लगता है, हम उसे फंस जाते हैं. That is leading to so many. This is one example I have given you. चूहा है, आपको चूहा को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? चूहे पर रिसर्च करना पड़ता है, चूहे की फेवरेट आइटम क्या है. आप माउस ट्रैप में वो चीज डालिए जो उसका फेवरेट आइटम है, फर्स्ट बार से फंस जाएगा. आप स्मार्टफोन डालोगे माउस ट्रैप में, चूहा नहीं फंसेगा, आप फंस जाओगे. ये चूहे की वो फेवरेट आइटम नहीं है. लेकिन अगर आप उसमें चीज डाल दो, 5 मिनट में फंस जाएगा वो. तो उसी तरह से lot of research is going on how to trap us. Psychiatrists are appointed, psychologists are appointed, scientists are appointed. How to devise a game. एक बार खेले तो खेलता रह जाए, फिर छोड़ने का मन न करे. फैमिली छोड़ देगा लेकिन गेम नहीं छोड़ेगा. बच्चा छोड़ देगा, गेम नहीं छोड़ेगा. हैं? ऐसे ऐसे एप्स डिजाइन हो रहे हैं. ड्रीम 11 बोलते भी हैं, जान माल का खतरा है, अपने रिस्क पे खेलिए. खेलते हैं लोग. How it is designed? Not a fool has designed this. Very intelligent people have designed all this. There's a lot of research on your psychology, human psychology. And we get trapped. And so much of our time, energy, which we are supposed to give to money, which we are supposed to invest in positive things, we invest in all these things. Because they are so attractive. So all this information, ये ही संस्पर्शजान भोगान दुख यो न योते आजंतवंत तुकांते नते सुरमते. In one sloka, Krishna explains this. What it looks attractive is the source of all suffering. Dukha yona. What is bhoga is dukha yona, source of suffering. Therefore, those who are intelligent, they don't take pleasure in these things. They separate. They keep control, sanjam. No, they know how to control, and that strength comes by chanting. जप करने से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम. That is the temptations you can control. They are very difficult to control. Very difficult. So to make all of you very peaceful and happy life lead, we are coming here. We are giving our time, energy, so that you all can get benefited. But only if you take it seriously. And we are not asking any money, anything. That is up to you. You have anyway. But I am not asking. I want that you all take benefit of Bhagavad Gita and be happy. Take benefit. You are not going to lose it. At least, suppose you are not going to gain anything, but at least you will not lose anything. Isn't it? चांस है कि कुछ नहीं मिला तो क्या, अरे कुछ नहीं मिला तो कुछ तो खोएगा तो नहीं. कम से कम ऐसा तो नहीं कि आपको जबरदस्ती हरे कृष्णा करेंगे तो चेक पे साइन कर देंगे 5 लाख रुपया तुरंत दे देंगे, 5 लाख गया हमारा. नहीं, ऐसा नहीं. No. You chant and you see benefited. You will get benefited. That's why we are coming, giving our time, because that is our mission, to help people. वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने से. वैष्णव का मतलब है, संत वो है जो दूसरों की पीड़ा को महसूस करता है अपने हृदय में, उनको हेल्प करना चाहता है. Otherwise, I speak for 1.5 hours. It is very, for me, it's not easy. You speak for 1.5 hours regularly. It requires a lot of energy, But yes, that is our service to all of you. And I will be very happy if you all accept this, come regularly, take benefit, you become a better. You all are very mature senior members, but you can become more strong and you can guide others also, your children, you are the leader of your family. If you learn these things, you can lead a very good family life. You can become a very good citizen
And you can become a good father, good mother, good husband, good wife. And the society will become very good. Thank you so much. Hare Krishna. Yeah, question, yes. If you have any question, Hare Krishna. Anybody, any question you want to ask? This is a great opportunity that Prabhuji is with us today. Can you tell us what is It's very just the expansion of it? E means encourage. Encourage others. It's the opposite of discourage. When you understand opposite, then you can understand this better. How we discourage other people. How many ways we can discourage people, And that actually kills the personality. Like I will give you one example from my life of encourage, not trailer, so that next time you come. Like I was preparing for IIT JEE, Joint Entrance Examination, in 97. And then first attempt, I could not clear the exam. And I was very much discouraged, dissatisfied, demoralized actually, depressed. And then my brother, elder brother, he used to, take care of me. And he wrote me a letter. He used to live in Delhi at that time. I used to live in Patna at that time. So he wrote me a letter after he came to know my result. He said, उसने हिंदी में लेटर लिखा, उसमें लिखा था कि तुम चिंता मत करो, रात्रि का अंधकार जब बहुत बढ़ जाता है तो समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द सवेरा होने वाला है. This one sentence, आज तक मैं उसको याद करता हूँ. That gave me so much encouragement. My people are with me, even in difficult time. That's what encourages person. Your one sentence can make a person, and your one sentence can break a person. That is the power of sentence, your words. And you should learn encouraging words in our life. That is E. In detail, I will explain next time. Okay? Thank you. Any other question? Anybody else, please? Yes. Thank you for wonderful talk. Just wanted to know if somebody's parents are not blessed with the art of listening because of a strong ego, and as a lot of parents think, of course, they know more than their children. Is there any way a child can make a parent realize what you just said? Yeah, there is a way, but there are ways for everything. But one thing is very clear, that there is no quick fix. You understand? There are no quick fix. Something is spoiled for long, cannot be fixed in a moment, or in a day, or in a week. Relationship gets spoiled for many years. We do so much withdrawal without any deposit in relationship. We withdraw so much and you don't deposit anything in your emotional bank account. So bankruptcy happens. So one good thing is that what Shastra, what Bhagavad Gita says about this. Gita says that, you see the Arjun case, Arjuna, at one point of time he says to Krishna, Karpanya doso apatso bhavam rikshami tvam dharma sammurcheta yat sriyasyat nisitam rohitam misisistam sadmam tam prapam. Unless a person wants to learn, how will you teach him?
If there is no hunger, आप 56 भोग भी परोस दो, व्यक्ति उसको वैल्यू नहीं देता है. That is the challenge. How to create the hunger that I also need to improve. So if somebody has a huge ego, he doesn't want to admit that he needs to improve. That is the greatest challenge. People are not, you see, such a big society where few people are sitting here. Everybody could have gone and could have benefited, yes or no? It's a free of cost? In charge? No charge. No charge. And everybody can come. Was it useful? Yes. But how many people are ready to accept? और यही अमिताभ बच्चन आ जाए तो ऐश्वर्या राय पूरा आपका कॉलोनी खड़ा हो जाएगा. प्रभु जी वो बोलते हैं कि सबसे पहली कृपा अपने आप पे खुद करनी होती है. Unless you take responsibility, change cannot happen. Yeah, correct. So that's where I'm saying that you सब लोग बैठना चाहिए आकर, फैमिली को बैठना चाहिए, और फैमिली आके बैठनी चाहिए, सुननी चाहिए सत्संग. बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई. विवेक आता है ना, कि क्या चाहते हैं हम. सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए हम लाइफ से चाहते क्या है. यही क्लियर नहीं रहता कि हम लाइफ में चाहते क्या है. ईगो डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग. और जब तक ये व्यक्ति समझता नहीं कि ईगो लेके क्या करेंगे हम, सब खत्म हो जाएगा. You'll be alone. You'll feeling lonely. Egoistic people generally they feel very lonely, you know. They're very lonely. On an island they live, and all the relations are finished. So actually they are suffering. Actually they are feeling great pain. Your father must be feeling great pain. Because somebody doesn't care for relation, he himself is suffering actually. So as a matter of etiquette, like you just tolerate and give positive things as much as reciprocate in a positive way. And उनको आप sometimes जो egoistic व्यक्ति होता है उसके ego के सामने कोई झुक जाता है उसको बहुत अच्छा लगता है, फिर उसकी बात सुनने लगता है. ऐसा होता है ना. कोई उसको ईगो को yes कर देगा ना तो at least he will start listening. So that way you can bring and try to by your behavior. That is the only way. That is the only way to change a person is by your behavior. There is no other way. Pray for them. Pray for them. Of course, pray for them. That is there. Pray for that. Prayers always works, but that is at last. First, you endeavor. Without endeavor, if you pray, it won't work. कहते हैं God help those who help themselves. So first you try your best and then pray for the rest. Yeah? So I was explaining about trying your best. First, what you can do from your side, that you do, and then second, whatever left is. I am very sure that if you try your best and then pray for the rest, it will work. Chant one round Hare Krishna for him. Dedicate to him. And dedicate to him. Yeah. And also do some practical things. जैसे कि the person feels to listen. And then you can advise, sometimes bring him here. He will like to hear. He will learn something good. That's how life transformation begins. Okay? Prabhuji, you gave an example of time versus 5 lakh. How Time? versus that 5 lakh rupees, right? Yeah. That you could have earned 5 lakh in that point. So, how do you, at a very early stage, how do you tell your children that, of course, money is important because you are living in a society, but at the same time, emotions and, love and,
all of the other things are also equally important. So how do you manage to create such a child, which when they grow up, they value relationships also. And we would not want our child out 20 years down the line to say, "Arey, you could have earned those 5 lakh. Why did you waste time?" So you would want that child to actually value and respect that, right? So how do you nurture a child in that manner? Same modeling. Modeling is very important. Remember that. Model the way. Best way is when your child sees you are very much respectful, loving to your parents. How much you value them. He sees, single person. And then you explain. While doing that, you explain. Why I am serving my father? Because when I was a small baby, my father did this to me. हम लोग क्या करते हैं उसको, तुमको पता है तुमको पढ़ाने लिखा कितना मेहनत किया है मैंने, ऐसे बोलते तो कौन सा एहसान किया है वो ऐसे सोचेगा कि बट आप अपने फादर के लिए बताओगे ना तो फादर से समझेगा कि फादर इतना करते हैं क्या. योर फादर ऑल्सो डज सो मच, योर फादर हैज डन सो मच. अपने बारे में देखिए, मैं मदर हूँ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत किया, अपना छोड़ के बाकी सबका बताओ उसको, है ना. एंड फादर जब बात करे तो बोले तुम्हारी मदर ने बहुत किया तुम्हारे लिए, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए. अब ऐसे करके देखिए, फादर शुड एक्सप्लेन द सैक्रिफाइस ऑफ मदर एंड मदर शुड एक्सप्लेन द सैक्रिफाइस ऑफ फादर. यू सी द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड. दैट्स हाउ वी ग्रैटिट्यूड. यू शुड फील ग्रैटिट्यूड नॉट टू मी, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, योर मदर हैज डन सो मच. एटलीस्ट उसको मत भूलो. And then the person understands. So that's how, no? But when we try to remind, मैंने तुम्हारे लिए कितना किया है, तो नहीं समझ, अपना मोमिया मिठी खुद बड़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा टच नहीं करता है आगे. उसी तरह से if you take care of your parents and so to them. मेरी मम्मी के मदर के पेरेंट्स आते हैं, कितनी खुश हो जाती है. मेरे फादर के पेरेंट्स आते हैं, इतनी खुश हो जाती है ना. तो उसको लगता है कि ऐसे खुश हुआ जाता है इसका मतलब. पेरेंट्स आते तो खुश होने लगता है. देन यू एक्सप्लेन व्हाई आई एम सो हैप्पी, बिकॉज़ ऑफ दिस. ये नहीं होते तो मैं नहीं होती, ऐसे करके तो उनको समझ में आ जाता है कि उसी तरह से. दैट्स हाउ वी कैन मॉडल द वे. मॉडलिंग जो दूसरों को हम सिखाना चाहते हैं वो हमें क्या करना है, खुद करना है, तो वो समझ जाते हैं. That is one of the ways. Most of the times we don't even need to explain. They see us and They see us they and know it. Yeah. If you chant Hare Krishna seriously, not just to make show, and your child is singing, my mother is chanting, and then after her behavior is so good. And she explained कि आज मैंने भगवद गीता में पढ़ा है ना, कि if somebody insults then still you should tolerate. तो बोला अच्छा भगवद गीता में ऐसा बताया गया क्या ये सब, अच्छा इसीलिए तुम इतनी अच्छी हो. हाँ, वो पढ़ना शुरू कर देगा ऐसे. और आपका बिहेवियर अगर खराब है और आप बोलो तुम गीता पढ़ो, अच्छा आदमी बनो, बोले आप तो बन नहीं पाएंगे. Like that. Is that okay? So you do this, you'll see. Focus on your parents. You teach the son how I am taking care of my parents. They will learn. Best way. And that is not happening. That's why you see wrong things are going down the line. उल्टी गंगा बह रही है. हम चाहते हैं कि सब लोग मुझसे प्यार करें, लेकिन हम किसी से प्यार नहीं करते, तो वो नहीं होगा. तो हम करके दिखाएं भाई. एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. ओके, थैंक यू.